Fluid and electrolyte balance in pediatrics, and it is quite an important chapter. So let's get started with it. So composition of body fluid. Water is the single largest constituent of human body. Total body water जो होता है declines from comprising 90% of the body weight in early fetal life. Hello, mummy. To nearly 75 to 80% at the time of birth, declining progressively to 60% by the end of first year and remains so till puberty. Since adipose tissue जो होता है adipose tissue has lower water content, फैट जो होता है फैट में वाटर नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोफोबिक होता है. सो एडोलेसेंट फीमेल जो होती हैं एंड ओवरवेट चिल्ड्रन जो होते हैं हैव लोअर टोटल बॉडी वाटर. उनको वाटर कम होता है उनकी बॉडी में एज परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट. सो टोटल बॉडी वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, मतलब सेल के अंदर 2/3 जो पानी है हमारा वो सेल के अंदर है और सेल के बाहर 1/3 पानी है. नियरली 1/4 ऑफ ECF जो बाहर में पानी है उसका 1/4 है वो एक्स्ट्रा वैस्कुलर यानी इंटरस्टिशियल और वैस्कुलर मतलब हो जाएगा वेसल्स के अंदर, यानी प्लाज्मा का जो वाटर होता है इन 3:1 रेशियो में रहता है. यानी जो पानी सेल के बाहर है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, या तो वो वेसल्स के अंदर होगा या वेसल्स के बाहर होगा. वेसल्स के अंदर 1 रेशियो में है और जो वेसल्स के बाहर है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में वो 3 रेशियो में. So preservation of intravascular volume is of paramount importance to homeostasis. जो vessels में वो fluid maintain करना, उसको preserve करना is of paramount importance. The relative size of two main compartment varies with age. Increase in the ECF volume contributes to the increase in the total body weight in neonates, especially in preterm babies. So the interstitial fluid component of the ECF is actually a matrix, a collagen gel substance होता है that allows the interstitium to provide structural rigidity. ये जो इंटरस्टिशियल हम लोगों ने बोला ना ECF इज़ इंटरस्टिशियल या फिर इंट्रावैस्कुलर है. वैस्कुलर के बारे में इंटरस्टिशियल जो होता है ना वो मेनली मैट्रिक्स और कोलाजन या जेल सब्सटेंस होता है जो कि अलाउ करता है इंटरस्टिशियम को टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी ड्यूरिंग द एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम डिप्लीशन. Now the interstitial space, especially in skin and connective tissue, is important reservoir of extracellular fluid. वाटर बैलेंस कैसे होता है? इन द स्टेडी स्टेट वाटर बैलेंस रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन वाटर का इनटेक इंक्लूडिंग दैट जनरेटेड फ्रॉम एंडोजीनियस मेटाबॉलिज्म एंड वाटर लॉसेस. ऑब्लिगेटरी यूरिन आउटपुट जो होता है प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सल्यूट्स रिक्वायरिंग एक्सक्रीशन comprises of 2/3 of the total water losses. Stool evaporation from the moist surface of the skin and respiratory tract. Insensitive loss बोलते हैं उसको, जो इवापोरेशन से स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो निकल जाता है फ्रॉम द रिमाइंडर. सो द इवापोरेटिव लॉसेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन थर्मो रेगुलेशन. वो हमारा हीट को मेंटेन करके रखता है. इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज इनसेंसिबल लॉसेस
स्वेट विच इज़ हाइपोटोनिक, सोडियम कंसनट्रेशन उसमें 35 से 65 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है स्वेट में। इज़ एक्चुअली सेंसिबल लॉस। स्वेट इज़ अ सेंसिबल लॉस। ये एमसीक्यू में आ सकता है नीट पीजी का, कि स्वेट जो होता है इट्स किस तरीके का लॉस होता है। तो इट्स नॉट इनसेंसिबल, इनसेंसिबल इवापोरेशन से होता है, बट स्वेट इज़ अ सेंसिबल लॉस contributing to the thermoregulation. When exposed to high heat environment जैसे endogenous और ambient, sweat contributes to significant loss of water with electrolytes. हाय शशांक। शशांक, अच्छा एक बात बताना कि तुम क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछते हो? द थिंग्स दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। हैप्पी दशहरा प्रंजुल जी। वेरी वेरी हैप्पी दशहरा टू यू टू। अच्छा, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पीडियाट्रिक्स पेशेंट, यानी जो बच्चे जो होते हैं फ्रॉम एकदम बच्चों से लेकर के 19 ईयर्स तक, हम लोग बेसिकली 19 तक तो एडोलेसेंट होते हैं, तो वो सारे पीडियाट्रिक्स में आते हैं। सो बेसिकली हम लोग उनका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और उनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अभी देख रहे हैं कि वाटर का कंपोजिशन जो होता है वो 60%, बॉडी वेट जो होता है ना उसका 60% वाटर बनाता है। तो उसका भी सेल के अंदर 2/3 वाटर सेल के अंदर होता है, केवल 1/3 वाटर सेल के बाहर होता है। वो दो फॉर्म में रहता है, या तो एक वेसल्स में रहता है, यानी कि जो हम लोग का आर्टरी में जो खून बह रहा है वो होता है, या फिर एक्स्ट्रा वैस्कुलर रहता है। एक्स्ट्रा वैस्कुलर कैसे, जैसे वहाँ पे रहेगा स्किन में, कोलाजन फाइबर्स में, ये सब बना के रहता है। तो दो तरीके का वाटर लॉस होता है, मतलब बहुत सारा वाटर लॉस होता है, बट दो तरीके का होता है। एक सेंसिबल वाटर लॉस, इनसेंसिबल वाटर लॉस। इनसेंसिबल इज जो इवापोरेशन से हो जाता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इवापोरेशन से जो स्किन से निकल जाता है। और ये जो स्वेट होता है ना, स्वेट इट्स एक्चुअली अ सेंसिबल लॉस जो कि थर्मो रेगुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए। अब इनपुट एंड आउटपुट देख लेते हैं पानी का। सो वाटर का इनपुट अगर आप देखोगे तो वाटर इनटेक जो है, फ्लूइड 60% और फूड से 30% पानी आता है। वाटर ऑफ ऑक्सीडेशन 10% आता है, ऑक्सीडेशन से वाटर जो है। सो द इनटेक इज़ रेगुलेटेड बाय ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस। और जो आउटपुट है वाटर का, वो यूरिन 60% हम लोग फ्लूइड पीते हैं, 60% यूरिन निकल जाता है। स्टूल से 8% निकलता है, स्वेट से 4% निकलता है। इनसेंसिबल लॉस जो है वो 28% होता है, बहुत हाई है। एंड स्किन और लंग्स ये सब से निकल जाता है। सो वाटर लॉस इज रेगुलेटेड बाय एंटी एडीएच, एडीएच हार्मोन जो होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। So balance of water intake and loss maintains normal plasma osmolarity. Only water intake and urinary losses can be regulated. So आगे पढ़ते हैं। So Shashank, I said कि जो भी तुमको समझ में नहीं आता, ask questions about that. I feel your questions are missing, that you do not ask any question about anything. Okay, तो आगे पढ़ते हैं। So changes in sodium का concentration in the extracellular fluid are tightly linked with extracellular volume and most commonly due to dysregulation of water balance than primarily sodium का balance. So the primary effector for volume का regulation, the renin angiotensin aldosterone system and atrial natriuretic peptide जो है, work by affecting the sodium excretion. Beside this, regulation of body water is made possible by interplay of multiple other factors including vasopressin, prostaglandin,
dopaminergic receptors, alpha adrenergic receptors, thirst mechanism, intrinsic renal properties, ये सबसे रेगुलेटेड होता है. I don't during studies. Well, I use ChatGPT, not Gemini, and I use it in like yes, I use it. I often use it, or sometimes I give my exam with ChatGPT itself. So, electrolyte composition of body compartment. The ECF compartment contains high concentration of sodium, chlorine and bicarbonate. ECF मतलब क्या होगा? सेल के बाहर ना, मेरे एक सर थे, उन्होंने ऐसा याद कराया था. मान लो ये सेल है, सेल के बाहर वही कॉम्पोजिशन है जो नदी का होगा. नदी में क्या होता है? नमक ज़्यादा होता है, तो NaCl जो है ना और बाइकार्बोनेट है वो सेल के बाहर ज़्यादा रहता है, यानी ECF में ज़्यादा रहता है. और पोटेशियम और ऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोटीन ये सब जो होता है ना वो सेल के अंदर ज़्यादा रहता है. प्रीडोमिनेंट ICF ऑस्मोल्स. As most electrolytes in homeostasis are distributed between ECF and ICF or bound to protein or tissue, the serum concentration do not necessarily reflect the total body content of a particular electrolyte. Permeability to ions vary in each organ, with the brain having least and the liver having most permeability. However, water readily crosses cell membrane to achieve an osmotic equilibrium between the two compartments. The balance and appropriate distribution of fluid within these spaces is maintained by the colloid oncotic pressure, membrane permeability, and hydrostatic pressure. Plasma and interstitial fluid are rich in protein, which determine the oncotic pressure. So, osmolarity and tonicity. ये क्या होता है? So, osmolarity milliosmol per kg is the solute concentration of a fluid. Changes in osmolarity can produce grave neurological consequences and even death, primarily due to water movement into and out of the brain. To prevent this, the plasma osmolarity and primarily determined by plasma sodium concentration is normally maintained closely between 1 to 2% of the normal, यानी 285 से 295 मिली ऑस्मोल है, इसका 1 to 2% वेरिएशन हो सकता है by variation in water intake and water excretion. This regulation system is governed by different osmoreceptors in the hypothalamus that influence both thirst and secretion of the antidiuretic hormones. So, plasma osmolarity can be measured directly using osmometers as well as estimated indirectly as follows. Plasma osmolarity 2 into sodium plus blood urea nitrogen by 2.8 plus glucose. So measured volume are greatly value up to 10 milliosmoles per kg, and this difference
gap. Increase in osmolar gap may occur due to increase in the unmeasured osmolar. मुझे ना ये चैप्टर उतना मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में. आई थिंक आई रीड इट. सो आई एम एंडिंग दिस सेशन. आई डोंट वांट टू वॉच the pediatrics. Maybe other day, some other day I'll read this. I'm just a little